So hello everyone. So today I am going to discuss the uses of determinants and some other topic related to the application parts of the determinants. Okay. So yesterday I have given the definitions of determinants and I explained how to expand of a determinant of order 2, order 1, order 3. So those things I have explained already. So today I will explain the uses. What are the uses of determinants? Actually, in geometry also we can use a determinant. In geometry, like to find the equation of a straight line, we can use a determinant. To find the area of a triangle, we can use a determinant. Okay, so now, so uses of determinants means to find the equation of straight line, to find the area of triangle, we can use the concept of determinant. Suppose the three vertices of a triangle are, say, A x1, y1, B x2, y2, and C x3, y3. The three vertices of a triangle ABC are given. Then how can we find the area of a triangle? We know one formula. One formula is there that to find the area of a triangle, whenever the vertices are given, the formula is half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. That is area of triangle ABC. Yes, if the three vertices of a triangle ABC are given, then we can use this result, right? लेकिन ये result कहाँ से मिला, कहाँ से आया ये result? कुछ तो इसका derivation होगा, explanation होगा, right? So ये result जो है वो determinant का concept से ही आया. Okay, so to find the area of a triangle, we can use the concept of determinant. Let's see. Since the three vertices are A, B and C, so area of a triangle ABC, this is equal to half of determinant x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. In this way, first of all, you have to arrange the vertices. Okay, in this way you have to arrange the vertices. Area of triangle ABC. I am using the concept of determinant. Area of triangle ABC is equal to half into determinant x1 y1. x1 y1 किसका coordinate है? Coordinates of A. x2 y2 coordinates of B. x3 y3 are the coordinates of C. और last column जो है, that is column number 3, third column fixed है. 1 1 1 से fixed करना पड़ेगा. 1 1 1 से फिक्स करने से ही एक्सपांड करने से वो रिजल्ट मिलेगा. अभी जो मैं लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. ओके, ये बात याद रखना है. थर्ड कॉलम को फिक्स करना है 1 1 1 से. नाउ सी, इफ आई एक्सपांड दिस, व्हाट विल यू गेट? हाफ इनटू, ये हाफ तो रहेगा ही. हाफ इनटू व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? x1. You know how to expand. In the last class I have explained how to expand a determinant of order 3. Yes, the first element is x1, so write x1, then delete the position of x1. So if you delete the position of x1, तो फिर क्या रहेगा? y2 into 1, that is y2 minus y3 plus, actually here should be minus sign, right? Now I am expanding along first column. Okay, I am expanding along first column. What is the second element? Second element is x2. So minus x2 into, alternate sign use करना है, plus, then minus, then again plus. I am expanding along C1, not R1. Okay, so the second element is x2. Now delete the position of x2. y1 into 1, that is y1 minus y3 plus the third element is x3. x3 into, now delete the position of x3. y1 into 1, that is y1 minus y2. Okay, so this is equal to half of x1 into y2 minus y3
So from here if I take minus common, minus minus it will become plus. So plus x2 into y3 minus y1. अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो y3 आगे आएगा, y1 बाद में जाएगा. प्लस x3 into y1 minus y2. This is the formula, the original formula only. Okay, area of a triangle. So कहां से मिला area of a triangle ABC का formula? By using the concept of determinant. ठीक है. So this is one of the use of determinant. By using the concept of determinant, we can find the area of a triangle. So if you know how to find the area of a triangle, ये area of a triangle related बहुत कुछ है. Now, collinearity का condition क्या है? What do you mean by collinearity? Collinearity means when the points lie on the same line. When the points lie on the same line, then we can say that the points are collinear, right? So collinear कब होता है? If the area of a triangle equal to 0, yes. If the area of a triangle is equal to 0, then only we can say that the points are collinear. तो ये भी concept में determinant use किया जाता है. Okay, collinearity का concept में भी determinant use किया जाता है. So condition of collinearity. Condition of collinearity. Condition of collinearity. So if the 3 points that is A x1 comma y1, B x2 comma y2, and C x3 comma y3, if the 3 points lie on the same line, then determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, this is equal to always 0. Yes, area of triangle is equal to 0. तो area of triangle में यहाँ पे मैं एक हाफ मल्टीप्लाई किया था, तो इक्वल टू 0 है तो हाफ को अगर यहाँ पे लेके आऊंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो नो नीड टू राइट हाफ. ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. In case by using the concept of determinant also we can prove area of triangle equal to 0. इसको एक्सपांड करने से अगर 0 मिलेगा तो then only we can say that the 3 points are collinear, right? So अभी तक मैं क्या डिस्कस किया आज? By using the concept of determinant, how to find the area of a triangle, and then condition of collinearity. Now there are 2 points, very important points. You have to remember these 2 points. The first point is, we all know that area cannot be negative, right? So since area cannot be negative, after expansion, if you will get any negative value, you have to consider it as a positive. That means always you have to take the absolute value of the determinant, right? The first point is, we all know that area cannot be negative. So that's why always you have to take the absolute value of the determinant. Of the determinant means, what is determinant? Determinant is a number associated to a square matrix. इसका मतलब कभी कभी एक्सपांड करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव में आया तो, इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैल्यू अगर नेगेटिव में आया तो यू हैव टू कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज वी ऑल नो दैट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड द सेकेंड पॉइंट इज, इफ एरिया इज गिवन टू अस, अगर एरिया का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एग्जाम्पल मैं दूंगा, पहले पॉइंट याद रखना है. इफ एरिया इज गिवन टू अस, देन यू हैव टू टेक both positive and negative value for the calculation purpose only. Okay, this is the second important point. If area is given to us, that means if area of a triangle ABC is given to us, then we have to take both positive as well as negative value for the calculation purpose. These 2 points are very important related to area of a triangle. Okay, now the third point, the third use of the determinant. क्या क्या बोला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल में यूज किया जाता है डिटर्मिनेंट, कोलिनियरिटी का कंडीशन में यूज किया जाता है, और एक पॉइंट भी बोला था मैं आज स्टार्टिंग में ही बोला था, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑल्सो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. नाउ सी, suppose there are 2 points A x1 comma y1
and B x2 comma y2. The equation of a line, the equation of AB is क्या होगा अभी? To find the equation of AB also we can use the concept of determinant. Now you see, this is a straight line, right? Now since it is a straight line, which means we can say that the 2 points lie on the same line only. So the 2 points, since the 2 points lie on the same line, we can consider one more point. Let there is another point C whose coordinate suppose x comma y. क्यों लेना पड़ा? Why we need to take this third point? Because A and B will be given in the question only. A और B का कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा. अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो अननोन वेरिएबल तो होना चाहिए, राइट? If there is no unknown variable, then how can we write the equation? अगर सब कुछ known values है तो equation कैसे मिलेगा? There must be some unknown variables, right? Like x, y, z. If there is no unknown variable, then how can we construct or how can we write the equation? So that's why to find the equation of a straight line, always you have to consider the third point as x comma y. X comma y are nothing but the two unknown variable. Without unknown variable, we cannot construct any equation. ठीक है? Actually, you have to find the equation of AB only. You have to find the equation of AB. But A and B will be given in the question. The coordinates of A and B will be given in the question. Without any unknown quantity, how can we write the equation? So that's why you have to consider the third point. So let the third point be C, whose coordinate x comma y. तो इसका मतलब क्या है? वो थर्ड पॉइंट भी तो वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होगा. Yes or not? अगर थर्ड पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो that means clearly we can say that these 3 points are collinear. So if the 3 points are collinear, what is the condition of collinearity? Just now I have given. What is the condition of collinearity if the 3 points are collinear? Determinant. Now, one more thing. The point which we are considering, the unknown point, just you write in the beginning only. Okay? So, जो point को मैं consider किया, which point we have considered? Point C only. So, इसको पहले लिखने से बेहतर होगा. X, Y, and then you write x1, y1, x2, y2, and the third column में पहले भी बोला था ये तो फिक्स्ड है 1 1 1 से, this is equal to 0. So मतलब इसको जब एक्सपांड करेंगे हम लोग, एक्सपांड करने से you will get a linear equation in two variables. Yes, linear equation because x and y are unknown only. X and y are unknown. x1, y1, x2, y2 will be given in the question. x and y का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और x and y अगर नहीं होगा तो इक्वेशन ही नहीं होगा. इसीलिए x और y को खुद एज्यूम करना पड़ेगा. That's why you have to consider the third point as a C, right? Which is unknown. और ये unknown ही रहेगा. So if I expand this one, then only we'll get a linear equation, which will be the equation of the straight line AB. Clear or not? So these are the uses of determinants. The first point is by using the concept of determinant we can find the area of a triangle. Condition of collinearity में use कर सकते हैं. And the third point is to find the equation of straight line. Okay? Which line? The equation of AB. So to find the equation of AB, we have to consider the third point, which is unknown point. This point is nothing but point C. Without unknown variable, we cannot construct any equation. I'm repeating again and again. So ये C को assume करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा. क्वेश्चन में A और B का वैल्यू ही दिया रहेगा, राइट? और जब इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, जब फॉर्मूला यूज करेंगे, तब x y को पहले लिखने से बेहतर होगा. बिकॉज दिस इज अननोन, राइट? तो इसको सबसे ऊपर ही लिखना है, मतलब फर्स्ट रो में लिखना है. एक्स वाई, x1 y1 मतलब A का कोऑर्डिनेट, x2 y2 मींस B का कोऑर्डिनेट, और लास्ट कॉलम तो हमेशा फिक्स्ड होता है 1 1 1 से. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई हैव रिटन इक्वल टू 0. Why I have written is equal to 0? Because the 3 points are collinear only. So since the 3 points are collinear, which means the area of triangle is equal to 0 only. तो स्ट्रेट लाइन में है, मतलब इसलिए तो राइट हैंड साइड में 0 लिखा गया है. तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तभी तो एक इक्वेशन मिलेगा, राइट? इक्वेशन मींस राइट हैंड साइड में तो कुछ कांस्टेंट फिगर होना चाहिए, राइट? अगर राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो दैट विल बी नॉट एन इक्वेशन, दैट विल बी एन एक्सप्रेशन. ओके, राइट हैंड साइड में अगर कुछ नहीं रहेगा तो
उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है। राइट हैंड साइड में अगर कुछ कांस्टेंट फिगर रहेगा तो उसी को ही इक्वेशन बोला जाता है। क्लियर? सो दीज आर द यूजेस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नाउ आई विल गिव वन एग्जांपल, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एग्जांपल, कोलिनियरिटी का एग्जांपल एंड इक्वेशन, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल। ओके, so once again I am repeating the two important points. What are the 2 points? The first point is, since area cannot be negative, so after expansion if we get any negative value, you have to consider it as a positive value, which means you have to take the absolute value of the determinant. This is the first point. The second point is, if area is given to us, अगर area का value question में दिया रहेगा तो then for the calculation purpose you have to consider both positive and negative value. Okay, this is the second point. एरिया का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहने से हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू भी कंसिडर करना है। सपोज इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सपोज 35, सो यू हैव टू कंसिडर इट एज प्लस माइनस 35। तो पॉजिटिव के लिए भी वैल्यू निकालना है, नेगेटिव के लिए भी वैल्यू निकालना है। जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ओनली यू हैव टू टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, राइट? So these are the points. Now I am going to give some examples. So let us discuss some examples related to the uses of determinants. The first question is, if the points 2, -3, lambda, -1, 0, 4 are collinear. If these 3 points are collinear, then find the value of lambda. Okay, if these 3 points are collinear, then find the value of lambda. What is the condition of collinearity? The condition of collinearity, solution number 1. Okay, condition of collinearity क्या है? Collinear means area of triangle is equal to 0. So let the 3 points be, say A 2, -3, B lambda, -1 and C 0, 4. So since the 3 points are collinear, which means we can write determinant x1 y1, a का जो कोऑर्डिनेट है that is nothing but x1, y1, तो x1 y1 2, -3 lambda, -1 0, 4 1 1 1, this is equal to 0. Yes or not? If the 3 points are collinear, then area of a triangle is equal to 0. But don't write is here half, because ये तो eliminate हो जाता है half. Okay, so since the 3 points are collinear, we can write it as like determinant 2, -3 1 lambda, -1 1 0 4 1, this is equal to 0. You are asked to find the value of lambda, right? So just you have to expand it. Yes, so for expansion, just you see maximum number of zeros are there in which row or column, because in the last class I explained for the easier calculation you check the maximum number of zeros are there in which row or column. जो रो और कॉलम में जीरो सबसे ज्यादा है, you just expand along that row or column just for easier calculation. ऐसा कोई मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बात नहीं है कि ये जीरो को एक्सपांड करने से, ऐसा करने से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा. नॉट लाइक दिस. जस्ट फॉर द इजियर कैलकुलेशन, टाइम कंज्यूम कम होता है. जस्ट फॉर द इजियर कैलकुलेशन यू चेक वेदर जीरो इज देयर और नॉट. अगर जीरो नहीं है तो देन नो नीड टू वरी. अगर जीरो है भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जीरो है तो चेक करना है कौन सा रो और कॉलम में है. जो रो और कॉलम में है जस्ट यू एक्सपांड इट अलोंग दैट रो और कॉलम. टाइम कंज्यूम कम होता है. So 0 is there in the first column, or you can say 0 is there in the third row also. तो कोई भी column मतलब either you can expand this determinant along first column or you can expand this determinant along third row. Okay, so if I expand it along first column, और तुम लोग अगर expand करोगे third row से भी तो same result ही मिलेगा. Okay, now I will expand this determinant along first column because 0 is there in the first column. ठीक है, 0 is there in the first column. Not only in the first column, ये 0 जैसा है ये first column में भी है, third row में भी है. तो first column you can expand this determinant by using first column or third row. So if I expand it along first column, what is the first element of the first column? 2. So write 2, then delete the position of 2. -1 into 1, -1. Minus
4 into 1. Second element is lambda. So minus lambda into, I am expanding along first column. So delete the position of lambda. Minus 3 into 1, that is minus 3, minus 4. Third element. Now here you see the third element. Third element is 0, so that's why no need to write 0. तो मतलब थोड़ा सा टाइम बच गया. वही इसीलिए ही देखना है कि 0 है कि नहीं डिटर्मिनेंट में. अगर डिटर्मिनेंट के अंदर 0 है तो उस वही रो और कॉलम लेके एक्सपांड करने से टाइम कंज्यूमिंग कम होता है. ठीक है. ओके. Now just simplify it. Minus 1 minus 4, this is minus 5. Minus 5 into 2 minus 10. Minus 3 minus 4 minus 7. This will be then plus 7 lambda. This is equal to 0. So therefore 7 lambda is equal to 10 or lambda is equal to 10 by 7. So if the 3 points are collinear, then the value of lambda is 10 by 7. So this is the required answer. Okay, so this is the solution of the first question. If you want to expand this determinant along third row, you can expand along third row also. You will get the same value 10 by 7. Okay, ऐसा कोई बात नहीं है कि 0 जहां पे उसी को ही expand करना है. You can expand it along first row or first column or second row, second column, third row, third column. कोई भी row और column लेके expand करने से same result मिलेगा, क्योंकि last class में मैं ये सब discuss किया था. Okay, now second question. What is there in the second question? Find the equation of the line. Of the line means of the straight line. Find the equation of the line joining the points P 11,7 and Q 5,5 using determinant. I have written here DET. DET means it is the short form of determinant. Okay. Actually ये क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो पहले मैं पार्ट 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ. पार्ट 1 मतलब यहां तक पार्ट 1 है. फर्स्ट पार्ट मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, उसके बाद सेकंड पार्ट में जाऊंगा. तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? यू आर आस्क्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P 11,7 and Q 5,5. Solution number 2, first part. So this is point P 11,7 and Q 5,5. So you are asked to find the equation of the straight line joining these 2 points. मैं बोला था ये 2 पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमेशा दिया रहेगा, लेकिन एक इक्वेशन बनाने के लिए, वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो अननोन क्वांटिटी होना चाहिए, राइट? So that's why you have to consider the third point. Always, in order to find the equation of a straight line by using the concept of determinant, always you have to consider the third point. Okay, so let a of x comma y, let a of x comma y be any point on the line PQ. Without the unknown quantities, we cannot construct or we cannot write any equation of a straight line. So that's why you have to consider the third unknown point. Okay, so let point A of x comma y lies on the line PQ. Okay, so that means clearly we can say that these 3 points, that is P, A, Q, are collinear. So since P, A, Q are collinear, then how can we find the equation of a straight line? डिटर्मिनेंट फॉर्मूला क्या था? मैं बोला था पहले जो अननोन क्वांटिटी उसको लिखना है, दैट इज x y 1, देन यू कैन राइट 11 7 1 5 5 1 which is equal to 0. कोलिनियर है इसलिए तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा. अगर राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं होगा तो इक्वेशन कैसे होगा? दैट विल बी एन एक्सप्रेशन, राइट? अच्छा, अभी और एक क्वेश्चन है कि हमेशा क्या x y को जो अननोन क्वांटिटी है वो हमेशा के ऊपर ही लिखना है? ऐसा कोई बात नहीं है, ये बीच में भी लिख सकते हो, इवन थर्ड स्टेप में भी, मतलब थर्ड रो में भी लिख सकते हो. तो देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए एक्स वाई को फर्स्ट रो में लिखने से बेहतर है. लेकिन एक्स वाई को थर्ड रो, सेकेंड रो, फर्स्ट रो, कोई भी पोजीशन में लिख सकते हैं. ठीक है, आंसर अल्टीमेटली सेम होगा. ओके, सो नाउ एक्सपांड इट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट एलिमेंट इज x. So write x, then delete the position of x. 7 minus 5. Next element is y. Now I am expanding along first row. Second element is y. So minus y into, delete the position of y. 11 minus 5. Third element is 1 plus 1 into,
delete the position of 1, 55 minus 35. You know how to expand? So 7 minus 5, that is 2. 2 into x, twice x. 11 minus 5, 6. 6 into y, that is minus 6y. 55 minus 35, that is 20. So plus 20, this is equal to 0, which is the equation of the line joining the points P and Q. देखो P और Q कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है, लेकिन अगर ये अननोन क्वांटिटी नहीं होगा तो एक्स वाई हाउ विल यू राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई? सो वो एक्स वाई को खुद एज्यूम करना पड़ेगा, इसीलिए तो एज्यूम किया, तो फिर जाके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिला मुझे. ओके, फॉर्मूला क्या है, मैं साइड में फिर से फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूं. फॉर्मूला है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. दिस इज इक्वल टू 0. वही फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है यहाँ पे. मीन्स हियर आई एम कंसिडरिंग x1 y1 आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, x2 y2 are nothing but the coordinates of P, whereas x3 y3 are nothing but the coordinates of Q. सिर्फ फॉर्मूला देख के बैठाना है और उसके बाद एक्सपांड करना है, दैट्स इट. ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, x, y जो है वो फर्स्ट रो में नहीं लिख के सेकेंड रो में भी लिख सकते हैं, थर्ड रो में भी लिख सकते हैं. आफ्टर एक्सपांशन यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, the equation of the straight line joining the points P and Q. Now I will explain the second part of the second question. What is the second part? Also find the value of K. Also find the value of K if R, capital letter R, coordinate -1 comma K is the point such that the area of triangle PQR, such that the area of triangle PQR is 9 square meter. So here area of a triangle is given. मैं 2 पॉइंट बताया था आज जब मैं क्लास शुरू किया तब मैं ये 2 पॉइंट बताया था कि if area is given, if area of a triangle is given to us, then what you have to do? You have to consider both positive and negative values. जो पॉइंट्स में बताया सबका एग्जांपल दे रहा हूं. Okay, if you want to find the area after expansion you will get any negative value, then always you have to consider it as positive because area cannot be negative. But if area is given to us in this question, area is given. So if area is given to us, always you have to consider both positive and negative value, right? तो देखो अभी मैं इसको कैसे solve करूंगा. You are asked to find the value of K. If the point R, whose coordinate -1 comma K, is the point such that the area of triangle PQR is 9 square meter. So area of triangle PQR are given. Area of triangle PQR are given. So this is a triangle PQR. Coordinates of P already given in the first part, that is 11,7. Coordinates of Q are also given 5,5 and coordinates of R -1, K. ये है इसका फिगर. ओके, area of triangle PQR is 9 square meter. It is given only. Okay. So by using the concept of determinant, how can we find the area of this? How can we find the value of K? Because already area is given. So according to question, area of triangle PQR, area of triangle PQR, this is equal to 9, which implies area of triangle formula is half of determinant x1 y1 1, x1 y1. तो x1 का वैल्यू क्या है 11, 11 7 1, x2 y2 1, 5 5 1, x3 y3 1, -1 k 1. This is equal to ±9. The second point में जो बोला था, if area is given to us, then always you have to consider both positive and negative value. So that's why I have written here ±9. Okay. So this is equal to determinant 11 7 1 5 5 1 -1 k 1. दिस इज इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ±18 हो जाएगा. ये 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ±18 हो जाएगा. ओके, नाउ एक्सपांड इट अलोंग फर्स्ट रो. फर्स्ट एलिमेंट इज 11, सो 11 into, delete the position of 11, 5 - k,
5 minus k. Second element is 7. I am expanding along first row. Delete the position of 7. Again 5 minus minus plus 1. Third element is 1. 1 into. Delete the position of 1. 5k plus 5. 5k plus 5. This is equal to plus minus of 18. Don't write equal to 0 because it is not collinear. Neither collinear or no, we are not finding the equation of a straight line. Here the area of a triangle is given. So that's why you have to write on right hand side plus minus of 18. Because question में दिया गया है 9. इसलिए cross multiply करने के बाद 18 हुआ. Now expand it. 55 minus 11k minus 42 plus 5k plus 5, this is equal to plus minus of 18, or minus 11k, that is minus 6k, 55 minus 42, that is 13 plus, that is 18, this is equal to plus minus of 18. Okay, now take one's positive value and then one's negative value. Okay, so if I take positive value, then the equation will be 6k plus 18, which is equal to 18, and again 6k plus 18, this is equal to minus 18. Okay, you cannot consider a negative or positive value here. You have to take both positive and negative sign. So minus 6k, 18 will be cancelled. This is equal to 0. Therefore, one of the value of k is 0. And here minus 6k, this is equal to minus 36. So minus sign will be cancelled. So k is equal to 6. So what are the values of k? 0 and 6. So this is the solution of the second part. Find the value of k if the point R is the point such that the area of triangle PQR is 9 square meter. So 9 square meter, that's why you have to write here plus minus of 9 since here area is given. After that, just you simplify it after simplification, and don't forget to take both positive and negative. We cannot ignore plus, neither plus or minus sign. Always you have to take both positive and negative if area is given to us. But if you are asked to find the area, then always you have to take the positive value only because area cannot be negative. Okay, ये दो point हमेशा याद रखना है. So these are the examples related to the uses of determinants to find the area of triangle, condition of collinearity, to find the equation of straight line. Some more topics are there. I will explain now. So the next subtopic is minors and cofactors. So एक डिटर्मिनेंट से कैसे माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है. लेकिन माइनर और कोफैक्टर है क्या एक्चुअली? फाइंड आउट तो करना है वो बाद में आएगा, पहले तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए. So the meaning of minor, the definition of minor is minor of an element. Listen carefully. Minor of an element Aij. We all know that element is denoted by small letter Aij. So minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which Aij lies. I will give one example. First listen carefully. A minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column in which Aij lies. मतलब वो जो एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है एक डिटर्मिनेंट से, वो एलिमेंट का रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचा रहेगा, that element is nothing but the minor of that particular element. ठीक है? And minor of an element is denoted by what? Mij, capital letter Mij, M for minor. Now I will give one example. See, minor कैसे find out करना है एक determinant से. Suppose one determinant is given. Determinant delta is equal to 1, 2, 3, 4. It is a determinant of order 2. Okay, determinant is a number associated to a square matrix. तो वो matrix तो square matrix ही होना चाहिए, right? So यहाँ पे मैं order 2 का एक example दे रहा हूँ. So if you want to find, question is, ये है इसका determinant का value. Question है कि find
the minor, find the minor of 2, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट 2 है 2 का माइनर फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द डेफिनेशन? माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, ऑफ एन एलिमेंट aij, which element? You have to find the minor of which element? Element 2. What is the position of 2? मतलब 2 कौन सा रो और कॉलम में है? 2 is there in the first row and second column. So here we can write A12 is equal to 2. Yes, first row, second column. So here A12 is equal to 2. So minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column of the element aij. So ये 2 जो पोजीशन में है ith row और jth column को डिलीट करना है अभी. So if I delete the position of 2, which means ith row and jth column, तो फिर क्या बचा रहेगा? Only element 3. So therefore we can write M12 is equal to 3, which means the minor of the element 2 is equal to 3. Okay, since minor is denoted by M, capital letter M, I, J. I और J का वैल्यू में 1 और 2 क्यों लिया? Because कौन सा एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है? एलिमेंट 2 का. तो एलिमेंट 2 कौन सा रो में है? फर्स्ट रो. एंड कौन सा कॉलम में है? सेकंड कॉलम. तो दैट्स व्हाई M12 is equal to 3. So in this way we can find the minor, right? ये तो है ऑर्डर 2 का. अभी अगर ऑर्डर 3 का एग्जांपल देना चाहिए तो क्या होगा? तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ ऑर्डर 3. Example of order 3. Say determinant delta is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Find the minor of 3. Find the minor of 3. So to find the minor of an element, what you have to do? First of all, you have to check the position of that particular element. जो element का minor find out करना है, वो element का position क्या है? It is there in the first row and third column. So here we can write A13 is equal to 3. What you have to do now? Delete the position of this element. 3 का position delete करना है. So after deleting the position, what will left then? 4, 5, 7, 8. Yes. So ये 4, 5, 7, 8 को expand करना है. Don't forget to expand. Last example तो order 2 का था. तो order 2 में delete करने के बाद तो एक ही element बचा. तो एक element बचा तो उसका determinant क्या होगा? Determinant of order 1 means that particular element only. In the last class I have explained. But in this case, after deleting the position of this particular element 3, what are the elements left then? 4, 5, 7, 8. You have to expand because minor is also a determinant only. Definition ठीक से सुनना है. Minor of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column. Minor is also a determinant. So that means you have to expand this one. You know how to expand. Cross multiplication 4 into 8, that is 32 minus 35. So M13, this is equal to 32 minus 35. This is equal to minus 3. So the minor of 3, according to this question, example, the minor of 3 is minus 3. Okay. After deleting the ith row and jth column of that particular element, whatever elements will left, you have to expand it. लास्ट एग्जाम्पल में एक ही एलिमेंट था, सो इसलिए एक्सपांड नहीं किया, लेकिन ये एग्जाम्पल में तो एक्सपांड करना पड़ेगा बिकॉज माइनर इज ऑल्सो ए डिटर्मिनेंट ओनली, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट माइनर. नेक्स्ट विल कम कोफैक्टर. कोफैक्टर क्या है? इफ Mij इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, if Mij is the minor of an element Aij, then the cofactor of Aij is denoted by Cij, C for cofactor, or you can write capital letter Aij. So this is the difference between small letter Aij and capital letter Aij. Small letter Aij represent what? Particular element, whereas capital letter Aij is what? It is cofactor of this particular element. You can denote it as either Cij or capital letter Aij. But the definition is what? Cofactor तो ये तो definition नहीं है. Definition क्या है?
defined as Cij or Aij, which is equal to -1 to the power I plus j into Mij. This is the formula actually. Definition means यहाँ पे formula लिखा गया है. Okay, तो कोफैक्टर का formula क्या है? -1 to the power I plus j into Mij. So the meaning is, if you want to find the cofactor of any element, of any particular element, जैसे माइनर निकाला पर्टिकुलर एलिमेंट का, वैसे ही कोफैक्टर भी निकालना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का. सो इफ यू वांट टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट. विदाउट माइनर वी कैनॉट डिटरमाइन कोफैक्टर, क्योंकि फॉर्मूला में ही यूज किया गया है माइनर, राइट. सो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? -1 to the power I plus j into Mij. So without minor we cannot determine cofactor of any element, right? तो पहले माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. नाउ आई विल गिव वन एग्जांपल हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर. लेट अस टेक दिस एग्जांपल ओनली, ऑर्डर 3 का. So this example only. Suppose you want to find the minor of the cofactor of 3. Find the cofactor of 3. So 3 का cofactor find out करने के लिए पहले 3 का minor find out करना है. अभी तो मैं निकाला था minor. So minor of 3 we got -3, right? Now cofactor कैसे find out करना है? Cofactor is denoted by what? Cij और Aij. तो C13 और A13 दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? -1 to the power, -1, it is fixed value, it is fixed number, -1 to the power I plus j. What's the value of I? I is 1, j is 3. 1 plus 3 into Mij. What's the value of Mij? Mij is -3. Now -1 to the power 4 is 1. 1 into -3, this is equal to -3. हमेशा माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू सेम होगा बोल के ऐसा कोई बात नहीं, ये चेंज होगा ही, हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे सेम मिला तो ऐसा मत सोचना कि माइनर का वैल्यू जो मिला वही कोफैक्टर का वैल्यू होगा, तो फिर कोफैक्टर नहीं फाइंड आउट करने से भी होगा. कोफैक्टर का वैल्यू माइनर का वैल्यू सेम होता है. नो, माइनर का वैल्यू और कोफैक्टर का वैल्यू हमेशा सेम नहीं होगा. यहाँ पे सेम मिला लेकिन हमेशा सेम नहीं होगा, बिकॉज पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. यहाँ पे 1 plus 3 दिस इज इवन नंबर, इसीलिए तो -1 प्लस हो गया. अगर यहाँ पे और मिलता तो फॉर एग्जाम्पल 1,2 तो -1 to the power 3 तो माइनस ही रह जाता, राइट. तो इसीलिए याद रखना है कि माइनर और कोफैक्टर का वैल्यू हमेशा सेम नहीं होता है. यहाँ पे सेम हुआ बट हमेशा सेम नहीं होगा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोफैक्टर. So whenever you are asked to find the cofactor of any element, first of all you have to find minor. Without minor we cannot determine cofactor of any element. Okay. There is some important points to be remembered. The first point means एक ही point है, थोड़ा लंबा point है. Expansion of determinant. Expansion of determinant. Suppose delta is equal to determinant A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये दिया गया है. You know how to expand. If the order 3, if the order of any determinant is 3, you know how to expand. You can expand it along first row or second row or third row or first column or second column or third column. इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है. शॉर्टकट मेथड क्या है? Expansion of determinant, expansion of such type of determinant can be written in cofactor form also. Expansion of any determinant can be written in cofactor form also. Generally you can use this formula, this shortcut technique in order 3. If the order of the determinant 3, then we can use this shortcut method. Okay. So expansion of determinant can be written in cofactor form as कैसे लिखना है? A11 into C11. A11 means it will be given in the question. A11 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा. इसके साथ C11 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसका मतलब है कि यहाँ पे A1 क्या है? A11 1 है, तो ये 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है. C फॉर व्हाट? कोफैक्टर. तो 1 का कोफैक्टर फाइंड आउट करो, फिर ये एलिमेंट के साथ कोफैक्टर मल्टीप्लाई करो, प्लस A12 इंटू C12, मतलब 2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करो.
देन A13 इंटू C13, दिस इज A13 C13, A13 का वैल्यू है 3 और C13 का वैल्यू मुझे मिला -3, सो 3 इंटू -3, वैसे फाइंड आउट कर सकते हो. दिस इज शॉर्टकट मेथड. ओके, यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो टू एक्सपांड the determinant of order 3. So expansion of determinant can be written in cofactor form. मैं कल क्यों नहीं बताया था, क्योंकि कल मैं माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, आज दिया, इसीलिए आज मैं ये शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं. ठीक है, कल मैं वो डायरेक्ट मेथड बताया था कैसे एक्सपांड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम लगे. सो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट मैं आज दिया, इसीलिए मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी आज दे रहा हूं. कैन बी रिटन इन कोफैक्टर फॉर्म, दिस इज द फर्स्ट formula. You can use this formula, or you can use A21 C21 plus A22 C22 plus A23 C23, or you can use A31 C31 plus A32 C32 plus A33 C33. तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, तीनों ही एक साथ यूज नहीं करना है, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करने से इसका रिजल्ट मिल जाएगा, एक्सपांशन का रिजल्ट. ओके, सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोफैक्टर आल्सो वी कैन एक्सपांड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. ओके, ये शॉर्टकट मेथड मैं आज एक्सप्लेन किया. एंड यहां से मुझे क्या मिलता है, ये तीन फॉर्मूला जो मैं लिखा, यहां से क्या सीख मिलता है. डेल्टा, दैट इज डिटर्मिनेंट, इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट, लिसन केयरफुली, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स. दैट इज, मतलब इसको मैं वर्ड में लिखा, sum of the product of the elements A11, A12, A13, these are what? Elements. So sum of the product of the elements of a row, A11, A12, A13 कहां पे है? फर्स्ट रो में है. Of a row with their corresponding cofactors. This is not factors, corresponding cofactors. Yes, A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? C11. A12 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12. A13 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C13. राइट, यही फॉर्मूला को मैं स्टेटमेंट में लिखा, वर्ड में लिखा. ओके, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. Don't apply all the three formulas at a time. You can apply either first one or second one or third one. Shortcut formula. By using the concept of cofactors, we can expand determinant of order 3. And the next point, which is very very important point, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में भी लगेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक ट्रू फॉल्स टाइप. क्या है ये? इफ एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ एलिमेंट्स of a row or column are multiplied with any other row or column, then their sum is always 0. मतलब अगर A11 के साथ अगर C21 मल्टीप्लाई किया, प्लस, मतलब मैं यहां पे लिख के देता हूं, दैट इज A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. इसका मीनिंग यही है, लास्ट स्टेटमेंट का मीनिंग यही है. इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ एनी अदर रो और कॉलम, आर मल्टीप्लाइड विथ द कोफैक्टर्स ऑफ, आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स of any other row or column, then their sum is always 0. मतलब एक रो में क्या क्या, फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट है? A11, A12, A13, A11, A12, A13. इसके साथ अगर दूसरा रो और कॉलम का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया तो देन देयर सम इज ऑलवेज 0. इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा इन द नेक्स्ट क्लास. आई विल गिव एन एग्जांपल. ओके, पहले ये ठीक से याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एग्जांपल दे दूंगा. इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम, एलिमेंट्स मींस लाइक A11, A12, A13 आर मल्टीप्लाइड विथ द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज ऑलवेज 0. A11 का तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C21 नहीं है, A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11 होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे C21 लिखा, मतलब दूसरा रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, तो इसीलिए तो इसका समेशन हमेशा 0 होगा. ये ट्रू फॉल्स जैसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क का, नहीं तो एक न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन दे सकता है. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव
the example of this point. Okay, so these are the things you have to remember properly. So today I have discussed the uses of determinants with numericals and the minors and cofactors with examples. In the next class I will give some more examples. Thank you for today.